आज मैं आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के सिलेबस में से एक टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है हर टीचिंग के लिए, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एसएसटी उसके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको जो करेक्ट आंसर है वो हाईलाइट करूंगा ताकि हमारा वक्त बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास MCQs नंबर 1 है, वो है व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन इन टीचिंग। आंसर टू इम्प्रूव टेस्टिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच टाइप ऑफ असेसमेंट measured a student's understanding of a subject at the end of course or unit. Answer summative assessment. Question which of the following is an example of formative assessment? Answer providing feedback on the draft essay. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगेन टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट पीरियड नॉलेज एंड स्किल। आंसर डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ rubric फॉर असेसमेंट। आंसर दे प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन। Question which type of assessment compare a student performance to predetermined standard or level of achievement? Answer criterion reference assessment. Next question हमारे पास है what is the purpose of norm reference assessment? To compare student performance to each other. Next question which of the following is an example of authentic assessment? Answer performance based task. Next question which type of validity refer to the extent to which a test measure what is claimed to measure. Answer content validity. Next question है what does reliability in assessment refer to? Answer extent to which a test produce stable and consistent result. Which of the following is an example of a performance-based assessment? Answer oral presentation. Next question which type of assessment is most suitable for measuring student ability to apply their knowledge and skill in real world context? Answer authentic assessment. Next question what is the purpose of test blueprint or assessment metric? Answer to ensure that test measure a range of learning outcome. Next question which of the following is disadvantage of using essay questions in assessment? Answer they are time consuming to grade, they lack objectively in scoring, they are difficult to construct. तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द असेसमेंट प्रोसेस बाय सेटिंग गोल्स एंड मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस। आंसर सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ असेसमेंट प्रोसेस। आंसर टू सपोर्ट लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the assessment allow students to demonstrate their understanding through written or verbal response rather than selecting from predetermined option? Answer subjective assessment. Next question है what is the purpose of norm reference assessment? Answer to rank student performance relative to the norm group. Next question है which of the following is an example of holistic rubric? Answer a rubric that provide an overall assessment score. Next question है which type of assessment is conducted during instruction to monitor student progress and provide ongoing feedback? Answer formative assessment. Next question है what is the purpose of criterion reference assessment? Answer to measure student performance against specific learning objectives. Next question है which of the following is an example of performance task? Answer science experiment.
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग स्टूडेंट एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। आंसर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस इन टेस्ट इवेल्युएशन। आंसर टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट टाइम। तो यहाँ तक हमारा जो है 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।